Okay, welcome back. Today I'm going to cover another very important landmark judgment, that is regarding the environmental jurisprudence in India, how the environmental law evolved, and what were those landmark cases which are very important regarding the protection of our environment. So earlier I have already talked about the Union Carbide case, that is the methyl isocyanate or Bhopal gas tragedy case. I have already covered polluter pay principle, precautionary principle, absolute liability, strict liability, Raylan and Fletcher rule, MC Mehta case, and so many other things I have already covered. So you can check the playlist. Okay, and now I am this is the compilation of few other important cases regarding the environment, because these are very important for your upcoming exam. So I am just compiling all those in few. It's a very minute summary, the minute summary regarding the exams. Okay, so please subscribe the channel so that you can get the regular updates of my videos, and please also mention in the comment box if you want any improvement. There is a I button at the top, just click on that and you will get the link of other study materials. So please subscribe. Now let's proceed with the environmental jurisprudence in India. So as I have already said, I have already covered the rest of the environmental laws. Okay, so environmental convention is also there in the playlist. So now it's very important to know certain other cases. The first case I am talking about, the Vellore Citizens Welfare Forum versus Union of India, 28th August 1996. So straight way I am coming to the point, because already the deeply we have already studied the things in the earlier cases. So Vellore citizen case may the precautionary principle means in the context of the municipal law, means the environment measure by the state government and the statutory authorities must anticipate, prevent and attack the cause of the environmental degradation. Means in the present case, the precautionary principle was applied, or you can say first time talked about the precautionary principle in the Vellore citizens case, and they have talked about the state government has to take the measures to protect the environment, means and they should end all those regions which are causing the degradations. So first case is the Vellore citizen case. So whenever the question is coming regarding the precautionary principle, so you can see the Vellore citizen case. Okay, now let me tell you one more important thing, that in the earlier Union Carbide case, I have already talked about you that the honorable justice followed the polluters pay principle there. Honorable Justice R.S. Pathak and Justice Ahmadi was in dissenting opinion, and so many things were there. So I have you just listen to that lecture, then things will be clear to you. So now I'm talking about the polluters pay principle. So for that, the Indian Council for Enviro-legal action and others, that is the petitioner, and the respondent here is the Union of India. So here the honorable court also endorsed the polluters pay principles, which under which the financial cost of preventing or remedying damage lie with those who cause the pollution. Means the person who is causing the pollution, has to pay. One thing is very important, I am just mentioning you the polluters pay principle. And honorable justice pn bhagwati in MC Mehta case, in the Shri food and fertilizer case, जो कि I have already explained, तो वहाँ पर क्या था, oleum gas leak case में वहाँ पे honorable justice pn bhagwati laid down the concept of the deep pocket theory also. Absolute liability theory was also, because no more the Raylan and Fletcher rule is applicable in the Indian context, because Indian economy is a evolving economy, it is a developing economy, industries are developing. So if there are exceptions, so the obviously the accused party will absolve themselves from the criminal liabilities. तो वो अपने आप को एब्जॉल्व कर लेंगे, बिकॉज देयर आर 5 exceptions to the strict liability. So no more strict liability is applicable in the Indian context, rather the absolute liability is a better option. So why not the person who is degrading the atmosphere should be held liable? Absolutely. So this is the absolute liability concept laid down in the case, in that case, the oleum gas leak case. So there just I am mentioning in between those things. So polluter pay principle के लिए you should remember that the Indian Council for the Enviro-legal action, ठीक है, ये आपको याद रखना होगा. आगे बढ़ जाते हैं थर्ड केस पे, इन MC मेहता एंड अदर्स वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 1986 का जो ये केस है, इट इज एनवायरमेंटल इम्पैक्ट मथुरा रिफाइनरी केस आई एम टॉकिंग अबाउट. सो इट्स पॉपुलरली नोन एज द ताज ट्रेपेजियम केस, and the writ petition was filed by the very respected person, that is the Mr. MC Mehta ji, and the court further stated
stated that 292 industries shall change over the natural gas as the industrial fuel की तरह आप इसका इस्तेमाल करें, और कोई भी कोल या इस तरह की चीज़ का इस्तेमाल ना करें जिससे कि ट्रास्ट ट्रेपेजियम जो ब्यूटीफुल मॉन्यूमेंट जो है वो डिग्रेड हो रहा है. इवन द इन्वायरमेंट राइट टू लिव इन ए क्लीन इन्वायरमेंट इज अ फंडामेंटल राइट ऑल्सो, आपका फंडामेंटल राइट है, तो इट इज ऑल्सो गेटिंग अफेक्टेड. तो कोर्ट gave certain right and benefit to the workmen employed in these 292 industries. इसमें one more important point was laid down that the worker shall continue द एम्प्लॉयमेंट एट द न्यू टाउन, वो उसमें करेंगे, एंड द प्लेस वेयर द इंडस्ट्री शिफ्टेड, उन्हें शिफ्ट के बारे में जो बोला गया था वहाँ वो करेंगे. और जो पीरियड है ना, इस द पीरियड बिटवीन द क्लोजर ऑफ द इंडस्ट्री, जब से वो बंद की गई है इन द आगरा, एंड इट्स रीस्टार्ट एट द प्लेस ऑफ रीलोकेशन, जहाँ पर रीलोकेट किया गया है वहाँ पर जब वो खुलेगी, इस पीरियड में वो एक्टिव माने जाएंगे. दे शैल बी ट्रीटेड एज एन एक्टिव एम्प्लॉयमेंट, एंड द वर्कमेंस विल बी शैल बी पेड, तो उन्हें पे भी किया जाएगा. ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट बात है. चौथा केस में बात करने जा रहा हूँ एमसी मेहता वर्सेस कमल नाथ पब्लिक ट्रस्ट डॉक्ट्राइन के बारे में है, एंड इज वेरी इंपॉर्टेंट लैंडमार्क केस ऑन द एनवायरमेंटल लॉ इन इंडिया. द डॉक्ट्राइन enjoins upon the government to protect the resources for the enjoyment of the general public rather than to prevent their use for the प्राइवेट ओनरशिप और फॉर द कमर्शियल पर्पजेस. मतलब इसका क्या हुआ, इस केस में पब्लिक ट्रस्ट डॉक्ट्राइन का मतलब होता है कि भाई इट मैंडेट्स द अफर्मेटिव स्टेट एक्शन, मीन्स द स्टेट की ड्यूटी है फॉर इफेक्टिव मैनेजमेंट ऑफ द रिसोर्सेज एंड एम्पावर्स द सिटीजन्स टू क्वेश्चन द इनइफेक्टिव मैनेजमेंट ऑफ दीज नेचुरल रिसोर्सेज. व्हाट आई एम सेइंग इज दैट इट इज़ द स्टेट गवर्नमेंट, वो उसे प्रोटेक्ट करें, ये पब्लिक ट्रस्ट डॉक्ट्राइन है, एंड द स्टेट इज द कस्टोडियन ऑफ दीज रिसोर्सेज, सो दे आर द प्रोटेक्टर एंड देयर ड्यूटीज टू प्रोटेक्ट दीज नेचुरल रिसोर्सेज. तो ये हो गया पब्लिक ट्रस्ट डॉक्ट्राइन कमलनाथ, ये आपको याद रखना होगा, केस का नाम बहुत इंपॉर्टेंट है. एक और हम लेते हैं यहाँ पे एमसी मेहता वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, दैट इज ए गंगा पॉल्यूशन केस, और यह जो टैनरी से जुड़े थे, कानपुर टैनरीज का केस है ये 88 का केस है. देखिए क्रोनोलॉजी आपको याद करनी होगी, 86 का अर्लियर था, ये 88 का केस है. यहाँ पे जो है पेटिशनर एमसी मेहता, रिस्पोंडेंट यूनियन ऑफ इंडिया है. डेट ऑफ द जजमेंट 12 जनवरी 1988 है, एंड द कोर्ट हेल्ड that despite the provision of the Water Prevention and the Control of the Pollution Act 1974 के होते हुए भी no steps have been taken by the state government, means there were no effective steps taken by the state board to prevent the discharge of the effluent into the river Ganga, and no effective steps were taken to prevent the public nuisance caused by these tanneries at the Kanpur. तो कोई भी इफेक्टिव स्टेप नहीं लिया गया था, और टैनरी जो चमड़ा उद्योग से जो भी केमिकल एफ्लुएंट आता था वो सारा पानी में मिल जाता था, एंड इट वाज वेरी वेरी डिफिकल्ट फॉर द सर्वाइवल ऑफ द पीपल, क्योंकि वहाँ का पानी बड़ा डर्टी हो रहा था. पीपल वर गेटिंग सिक, एंड केमिकल एफ्लुएंट इज ऑल्सो कॉजिंग इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन. जो एक्वेटिक एनिमल्स थे उनके लिए भी है, बायो मैग्निफिकेशन ऑफ मरकरी वगैरह, लेड वगैरह का केमिकल जो था, इट वाज फ्लोराइड, एंड देयर सो मेनी अदर केमिकल्स वर इंक्रीजिंग इन द गंगा. सो द कोर्ट ऑर्डर दीज टैनरीज टू एस्टैब्लिश ए प्राइमरी ट्रीटमेंट प्लांट आप बनाएं, और अगर नहीं बना सकते हैं तो यू प्लीज शिफ्ट योर प्लांट टू समवेयर एल्स. तो प्राइमरी ट्रीटमेंट प्लांट किया, इफ नॉट द सेकेंडरी ट्रीटमेंट प्लांट, तो एटलीस्ट प्राइमरी बनाया, और उसमें स्लज में से अलग करें ऐसा केमिकल जो कि इन्वायरमेंटल डिग्रेड करता है. तो ये कानपुर टैनरी का था. एक छठा केस यहाँ पर और भी लूँगा, म्युनिसिपल काउंसिल रतलाम वर्सेस श्री वर्धीचंद्र 1980. सो सुप्रीम कोर्ट डिसीजंस रिगार्डिंग द म्युनिसिपैलिटी दैट क्लेम एन इनएबिलिटी टू प्रोवाइड बेसिक सैनिटेशन फैसिलिटीज एंड प्रिवेंट स्ट्रीट कंटामिनेशन इन द स्लम एरिया. तो यहाँ पर भी म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन रतलाम, यहाँ पर भी क्या था कि अगेन द directions were given to the municipalities regarding the establishing the you can say those washrooms and other kind of facilities, sanitation facilities should be provided, because people were going outside in open area. Open defecation was there, which is causing which was a cause of so many diseases, diarrhea, malaria, and so many diseases were there. And I have already said the authorities, the state government has to do all these things. So why not despite having so much of complaint and directions, means request from the people, why the government is these authorities are not actively participating? So this is why how the directions were given to these municipalities and all, so to just the means to provide these sanitation facilities and to prevent such street contamination in these slum areas. So I have covered sufficiently this part also, and very very important case I have covered. God bless to everyone to listen me, and if you need any improvement, please let me know. Please subscribe the channel so that you can get the regular updates, and all the best.